चलेंगी. So today's GK is all about some of the current designations and related information in Pakistan, and we'll also be looking into current ministers and governors of different provinces of Pakistan, right? And in case, at your will, if you guys allowed me, then we'll also proceed to some of the general knowledge as well in today's sessions. All right. तो सबसे पहले uh, uh, we'll have start up with a website tour, right? एक वेबसाइट पे जो है हम चलते हैं. I'll make it. All right. So क्या stopping this, and here we are. All right, so are you seeing this picture or a screen? My Google screen? Yes, sir. Yes. So there's a very good website for general knowledge, and that is Park MCQs, right? I'll also give you the link. So this is the exercise. This is the link that you will visit, and here is the link, right? So इसमें जब आप जाएंगे, so here is the home page, and so this contains MCQs, right? And this is very good exercise, and you can even have quiz, you can have current affairs regarding to Pakistan, you can have world affairs as well, right? So this is very popular, and this is very effective website which can help you to learn GK, all right, national as well as international. And then you can even have a quiz, right? You can even have a quiz so that you keep testing up, like your general knowledge quiz, your Park Study and skills quiz, and they have this app as well. आप app भी install कर सकते हैं, and you can have multiple practice over there as well. So this was the like very effective website. So you can either have English MCQs, math MCQs, general knowledge MCQs, Park current MCQs, word current affairs MCQs. ठीक है जी? So they are really helpful. So this was the website that I wanted to show you, and I wanted to have a bit of knowledge and understanding. All right, जी. Like there is the exercise for English and math as well. So अच्छी website है. All right. उसके बारे में बच्चों, we have some of the main designations in Pakistan currently. ठीक है. For these I don't think so आपके टेस्ट आने तक they will be changing, right? क्योंकि ये होता है ना कि पार्टी चेंज हो जाती है, तो उसकी कैबिनेट भी चेंज हो जाती है. बट अभी आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उस तक तो कोई नजदीक की चांस नहीं आ रहा, तो आई थिंक वहां तक तो दे विल रिमेन दिस. सो प्रेसिडेंट हमारे जो हैं डॉक्टर आरिफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं. ठीक है. नून लीग इज द करंट पार्टी विच इज इन एक्शन, राइट? और सेनेट चेयरमैन जो है सादिक संजरानी हैं. Then we have Deputy Chairman Senate, which is Mirza Muhammad Afridi, right? And then we have Speaker National Assembly, that is Raja Babir Mishra, and the Deputy is Deputy NA is Zahid Akram Durrani. So these are some of the major designations in Pakistan when it comes to upper house and lower house, यानी कि सेनेट में और नेशनल असेंबली में, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. ठीक है जी. उसके अलावा प्रोविंस वाइज हमारे जो सीएम्स और गवर्नर्स हैं,
उन पे जो है हम देखते हैं कि कौन है। तो सिंध में जो है चीफ मिनिस्टर जो है सीएम जो है मुराद अली शाह है। सैयद मुराद अली शाह जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सिंध में। एंड गवर्नर जो है कमरान तिसोरी हैं। और जो डेट्स व्हेन इन ऑफिस ये जो है इनके लिए है, गवर्नर के लिए। ये जो वाला कॉलम है, दिस इज फॉर गवर्नर नॉट फॉर चीफ मिनिस्टर, राइट। तो ये आप मिक्सअप ना करिएगा। तो कामरान तिसूरी साहब जो है 10 अक्टूबर 2022 को इन्होंने गवर्नर का चार्ज संभाला है और इनको 171 दिन हो गए हैं। ठीक है जी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी हैं और गवर्नर जो हैं मोहम्मद वालिद रहमान हैं। ठीक है जी। केपीके में एम आजम खान हैं और हाजी गुलाम अली इज द गवर्नर। बलूचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस डिजेंजर साहब एंड अब्दुल वली काकर साहब इज द गवर्नर। और जीबी इज खालिद खुर्शीद एंड सैयद मेहदी शाह फॉर गवर्नर। ठीक है जी। आते तो नहीं हैं कि कितने दिन हुए, बट एटलीस्ट फॉर नाउ जो है आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। परफेक्ट। इसके अलावा जी मिलिट्री पर्सनल्स, मिलिट्री के जो आर्मी स्टाफ्स होते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो है मेजर जो तीन बॉडीज टाइप्स ऑफ मिलिट्रीज काम करती हैं। पाकिस्तान आर्मी होता है, पाकिस्तान नेवी है एंड पाकिस्तान एयरफोर्स है। सो आर्मी इज ऑफ लैंड। आर्मी जो होती है, पाकिस्तान आर्मी जो होती है वो लैंड पे, यानी कि जो जमीन पे काम करते हैं। ठीक है जी। और नेवी जो होती है वो जो समंदर पे काम करती है, मेरी टाइम डिफेंस। ठीक है जी। और एयरफोर्स जो होती है वो हवाई हवाई फोर्स, यानी कि हमारी एयरफोर्स। तो ये पानी वाली होती है, ये जो जमीन वाली होती है आर्मी। नेवी पानी वाली होती है और एयरफोर्स जो है हवा वाली। ठीक है। तो ये मतलब तीन डिफरेंट होती हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की जो हेड क्वार्टर है वो रावलपिंडी में है और नेवी और एयरफोर्स जो है वो इस्लामाबाद में है। और इसके अलावा इनके जो चीफ हैं वो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं सैयद आसिम मुनीर हैं, जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं। और इसके अलावा जो नेवी में है दैट इज एडमिरल एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी, राइट। एंड जो एयरफोर्स के चीफ हैं दैट इज चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, राइट। तो ये हैं हमारे जेनरिक डेजिग्नेशंस और पर्सनल्स, राइट जी।